PPT is visible to all guys? Yes, sir. Okay, that's great. So here, as you can see, the topic that we are discussing now is distortion, basically. So distortion caused by lens that we will discuss. Firstly, let's understand what is distortion is. Mainly, the distortion word se aap jate ho, it means kind of deformation, right? Whatever the actual shape and size, right, is there, same size or shape. So you can say that the shape will not remain same. There's a kind of deformation that will happen. Okay. So this kind of deformation happened by the lens. Okay. So in photography, there are two types of things through which you can say there will be the distortion, right? और वो distortion क्या हो सकता है? One will be the optical and another will be the perspective. Optical distortion caused by the optical design of the lenses, right? So which kind of lens that you are using? You are using wide angle, you are using telephoto or the normal. So it's depend upon the lens to lens. Or ये जो deformation है or the distortion है, it's also depend upon the quality of lenses. In some lenses, it's rarely it's noticeable, but in some lenses, ये बहुत ज़्यादा noticeable होता है. So it's depend upon lens to lens and the optical design of the lens, the quality of lenses. But here we'll discuss that how it's happened basically. And another distortion is called by the perspective distortion. Perspective distortion mainly caused by the the position of the camera in relation to the subject. The camera ka position character ke paas kar. You guys have many times used your camera, sometimes or the phone camera. Many times you feel once you take closer to the character, you feel that there's a certain kind of deformation. Whatever the actual shape, even it's more noticeably on the edge of your lenses or the corners, or sometimes something that is a straight line, or even you can notice it if you get your camera closer to your face, you can feel that there's a certain kind of deformation, right? So basically, this kind of deformation happened due to the perspective. Perspective means the things is where you put your camera in relation to your character. The character से camera का distance कितना है, this will create that kind of deformation. So ये कम किया जा सकता है. The reason by placement of your camera. कि कैमरे को आपने थोड़े डिस्टेंस पे लगाया, कैमरे को आपने डिस्टेंस दिया, तो ये डिस्टॉर्शन नहीं होगा. But in terms of optical distortion, ये होगा. Right. So optical distortion, let me discuss. There's a two types of distortion in optical distortion. One is pincushion. Okay. One is barrel distortion, right? So mainly we can say that the type of optical distortion is, there's a two types of optical distortion. One is barrel, another is pincushion distortion. Sorry. Okay. Barrel में क्या है? Barrel distortion commonly seen on wide lenses, wide angle lenses, where line appear curved inwards, and the pincushion is just the opposite to barrel distortion. Okay, इसमें क्या होता है? Line appearing curved outward, right? कि उसमें क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है. That's the difference. It's just the opposite the barrel distortion. There will be the pincushion distortion. Mainly, ये जो pincushion distortion, it will find in mainly telephoto lenses. You can say the opposite the wide angle lenses. At the wide angle lenses have the barrel distortion. Commonly, it's the barrel distortion. It's called the. And secondly, is the pincushion. It means it will find in telephoto lenses. But why it's happened? Line दिखा दो. Say this one. There's a three images in one as showing that there's a no distortion at all.
in barrel, it's showing that the center line is aligned. And after that, क्या हो रहा है? And see the pincushion distortion, the center again, the center is straight, but outline is curved, right? दोनों के outline curve है, that is outward, this one is inward, right? So basically होना क्या चाहिए था? There will be no distortion, every line will be a straight. If it means, just think like this. If in your image is something on the corner, look, in every images, in these three examples, a straight line is straight. A straight line में कोई changes नहीं हो रहे हैं, कोई deformation नहीं हो रहा है. A straight line, but at the edges somehow एक outward की तरफ कर रहा है, दूसरा inward की तरफ कर रहा है. It means just the bending the things, right? A straight line तो curve रहेगा. Think like this. If something will be on the right or left hand side, that is a straight, right, in your frame, वो क्या होगा? Either there will be the barrel or there will be the pincushion distortion. या तो उसे inward खींचेगा या उसे outward खींचेगा. It's depend upon the nature of your lenses, which kind of lenses that you are gonna use. Sorry. So see. So I read it once. Okay, barrel distortion, how they explain it. Yes. When a straight line are curved inward in a shape of barrel, commonly seen on wide-angle lenses, barrel distortion happening because the field of view of the lens is much wider than the size of image sensor, and hence it needs to be skewed to fit. As a result, a straight line are visibly curved inwards, especially towards the extreme edge of the frame. So, for an example, is it visible, right? So your sensor is rectangular, right? Your sensor is rectangular, that is clear. And your lens is spherical, right? आपका लेंस क्या होता है? Spherical है आपका लेंस. आपका सेंसर क्या है? Rectangle है. But which kind of image you got? The rectangle image. Whatever the size of your sensor, according to that, is it producer is captured, right? Lens आपका spherical है. The second thing is कि lens have the certain areas or field of view, right? कि कितने एरिया तक कवर करता है. तो there is certain field of view. If you guys have purchasing televisions, right? उसका भी एक field of view होता है. कोई मॉनिटर लेते हैं उसका भी एक field of view होता है. To which angles कितने डिग्री एंगल तक ये दिखाई देगा. So somehow, if your lens have the greater field of view than your sensor, क्या होगा? उसे कंप्रेस करना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? सो हो क्या रहा है? आपका यहाँ पर लेंस सेंसर का फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, लेंस का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है. सो दैट्स द वन रीजन वो विग्नेट नहीं बनाएगा, बिकॉज ऑप्टिकली छोटा नहीं है. ऑप्टिक्स इज बिगर. ऑप्टिक्स आपके सेंसर से छोटा नहीं, दैट विल प्रोड्यूस अ विग्नेट इफेक्ट. Optics is bigger, but things is that field of view is bigger than the field of view of a sensor. That's the reason वो क्या करेगा? अंदर की तरफ उस चीज को खींचेगा. So what happened? Whatever line और जो भी चीजें आपके edges पे होंगी, that will look curved. वो आपको curve दिखाई देगा. I'll show you this one. See. Have you guys ever noticed in your cell phone when you are shooting something that is straight on the edges of your frame? Anyone from you, have you noticed it? और अगर नहीं किया तभी क्लास के बाद ब्रेक में just take your phone and because आपके फोन में वाइड एंगल लेंसेज ही होते हैं, जूम मत करना,
और कोई भी स्ट्रेट लाइन जो आपके एजेस पे हो, ट्राई टू गेट लिटिल बिट क्लोजर टू इट एंड सी टू इट कि क्या ये होता है क्या, कोई डिफॉर्मेशन या कुछ ऐसा, या कम से कम आप पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन तो देख ही सकते हो, राइट, कि जो आपका एक्चुअल शेप है उसमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है. तो सी टू बैरल डिस्टॉर्शन, इसमें क्या हो रहा है, field of view of lens is bigger than the field of view of your sensor. So what happened? वो अंदर की तरफ खींच रहा है. I use the example, इमेज में दिखाता हूँ आपको. Here it will be. This is the perspective distortion. और देख लो. I think everyone have faces these problems. By position of the camera. This is the relation between cameras and the characters, right? The distance between camera and characters. उसके कारण ये होता है. That's the one reason it's become this kind of things. Now see this image. On the left and right edges, what happened? Is the line is a straight or bending? Line is bending, right? Line is bending properly. Center में कुछ नहीं है. Center is a straight, but the जो आपके left and right side cases हैं, that is look curved towards the frame. The reason, lens का field of view बड़ा था, sensor is smaller, so that they have to fix it on that sensor, on the particular size of sensor and particular field of view. So that's the reason whatever things will be in left and right hand side, वो क्या करेगा, उसे compress करके अंदर करेगा. So that's the one reason आपको दोनों साइड कर्व इमेज दिखाई दे रहे हैं. The thing is that you can fix this problem in editing. I got the right image. अभी जो आपके left and right hand side के जो straight line pillars हैं, is it appears straight? But the thing is that आपका frame थोड़ा crop हुआ है. If you noticed it, see previous one and now see another one. Is it cropped or not? It's being cropped, right? So with the help of software, you can fix it. And as I told you earlier, it's also depend upon, the quality of lenses, the which kind of lenses that you are using. Most of the photography lenses have this kind of problem mainly, जो noticeable होता है, but in cinema lenses can be minimized. बहुत कम होता है, but होता है. Optics के ये problems हैं कि optic have that kind of things. The optic में distortion होगा ही, optical image में distortion होगा ही, right? But minimize हो सकता है या ज्यादा हो सकता है. It's totally depend upon nature of lenses. So just see, barrel distortion is clear. Is there any question for the barrel distortion? Guys, किसी को समझ में नहीं आया हो barrel distortion, is ask. नहीं है? Okay. So here is the pin cushion distortion. इसका सीधा opposite कर दो. जैसे कि वहां opposite था wide angle and telephoto. इसमें क्या होगा? If you are using telephoto lenses, means telephoto lenses have the field of view क्या होगा? Smaller होगा, right? And lens का क्या होगा? Lens का field of, sensor का field of view क्या होगा? बड़ा होगा. So that's the one reason to fix it on the same field of view. What they have to do, उसको क्या करना होगा? Stretch करना होगा, खींचना होगा to fix it on the sensor. So that's the reason telephoto have the pin cushion distortion, as you can see over here. Pin cushion distortion is the exact opposite of the barrel distortion. A straight line or curve outward from the center. This type of distortion is commonly seen on telephoto lenses, and it occurs due to image magnification increase toward the edge of the frame from the optical axis. This time the field of view is smaller than the size of the image sensor. It is not the size of the image sensor, it means the image sensor's field of view.
So it need to be straight to fit it. As a result, a straight line appear to be pulled to invert the corners. So see this one. इसमें क्या हो रहा है? Pincushion distortion में the right hand side example. So see to it. जो भी straight line, look, both images have, दोनों जो images हैं, either the barrel, either the pincushion. See to it, center line is straight. Center line didn't affected at all. Center line को कोई effect नहीं हुआ है. Only edges get affected. जो deformation है वो edges में है, कहीं से भी center में नहीं है. तो center ठीक है, कहाँ से fix हो रहा है? Because अब आप, मैं अभी लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूँ, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कट भी रहा है. द थिंग्स इज दैट ये आपका लेंस क्या है? स्फेरिकल है, तो पूरा का पूरा होगा ना. बट द थिंग्स इज दैट स्ट्रेट लाइन में ऊपर साइड की बात कर रहा था, बिकॉज फॉर दैट एग्जांपल्स स्ट्रेट लाइन लाइक लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड थे आपके. सो दैट्स द रीजन. सो सी टू इट. इसमें क्या हो रहा है? फिक्स किया जा रहा है फील्ड ऑफ व्यू को. किस पे? आपके सेंसर की फील्ड ऑफ व्यू पे. सो दैट्स द रीजन देयर विल बी अ स्क्रैच, बट द center line will remain straight. So here is say this one. इसमें क्या लग रहा है? Center line is straight, but जो साइड की लाइनें हैं इधर द लेफ्ट और राइट हैंड साइड से तो इट उसको क्या लग रहा है? खींच रहा है, राइट, टुवर्ड्स द एजेस. सो दैट्स द रीजन दिस काइंड ऑफ distortion will happen. Sorry, that's not. So guys, कोई क्वेश्चन है इन दोनों से तो पूछ लीजिए, देन आई विल स्टार्ट सम अनदर टॉपिक. So hi, this is Shomana. Can you write it? Oh, voice break होती, just write now. No restriction. Okay, let me discuss you. After the normal lens, right, 55 or 65 you start using, you can feel it. But it's as I mentioned you earlier, it's totally depend upon, the quality of lenses. If you are using a photographic lenses, even you can feel it on the 85 or the 90 95 or 100 आप किसी भी फील कर सकते हो. बट फॉर द सिनेमा लेंसेज वो जल्दी दिखाई नहीं देता है. आप अगर सॉफ्टवेयर में जाके देखोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी विजिबल. आप नॉर्मल अगर फ्रेम देख रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉन्ट विजिबल, आपको जल्दी पता नहीं चल पाएगा. हाँ, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेट एट द एज ऑफ द फ्रेम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन फील इट कि कुछ स्ट्रेच कर रहा है, बट अननोटिसेबल होता है. बट फॉर फोटोग्राफिक लेंसेज एंड सॉरी टू मेंशन इट, बट द चीप क्वालिटी लेंसेज, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे ऑप्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. इवन यू कैन फील इट ऑन 1855 जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंसेज आते हैं, उस पे भी देख सकते हैं आप कि आप 55 mm पे जाएंगे तो यू कैन फील के डिस्टॉर्शन. 18 mm कर दीजिए, यू कैन फील इट देयर
डिस्टॉर्शन. सो कोई फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं है, बट मेनली ये होता है जब आपको, बड़ा सिंपल है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सेंसर साइज आल्सो, बिकॉज you know the different size of sensor is available in market. Some are the full frame, some are will be the crop. So it's also depend upon that one, because a smaller sensor have the smaller sensor का field of view क्या होगा, कम होगा, राइट. तो वहां पर फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया, तो सेम लेंस हो सकता है आपके स्मॉलर सेंसर पे दे दे बट दूसरे वाले सेंसर पे ना दे. तो ये रिलेशन है इसका काइंड ऑफ सेंसर के साइज से. आपका जैसा सेंसर का साइज होगा अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रोड्यूस होगा. बट दिस इज द नेचर ऑफ एनी लेंसेज. इफ इट विल बी टेलीफोटो, वो प्रोड्यूस करेगा. हाँ, मिनिमम हो सकता है, नोटिसेबल नहीं होगा, बट इन सॉफ्टवेयर इट विल बी विजिबल. So I think if you anyone you guys are using the editing software, kind of Photoshop or the another one, उसमें डिस्टॉर्शन का ऑप्शन ही दिया हुआ है कि डिस्टॉर्शन फिक्स करने का, कि कोई भी इमेज आप क्लिक करके लाइए और डिस्टॉर्शन ठीक करने के ऑप्शंस उसमें होते हैं. So it's totally depend upon which kind of lenses that you are using. Any other questions? Okay. ये पीपीटी दिख रही है सबको? Okay, as you guys can see over here, it may be the question they can ask, what's the main difference between cinema camera and the DSLR? There is a many, it's subjective key. Whatever you feel, you notice, you can write it, but here I'll discuss a few points. So there will be many, but here I'll discuss a few points. So firstly, that will start it is compression. So I'll start it with the compression. I'll tell you what is compression is. You guys have seen the many format of videos file, right? MP4, MOV, AVCSD, right? बहुत सारे types के videos होंगे आपके पास जो आप देखते हो. Do you feel any differences in terms of quality in different media players or with the different extensions that they have? मैं एक simple सा compression का example बताता हूँ. If you post something on your Facebook or if you share something through the WhatsApp, do you feel the same quality of that image will remain once you send it and again you download it? रहता है क्या? If you share on WhatsApp or the Facebook, क्या ये रहता है? No, sir. नहीं रहता. The reason? The reason is compression, because WhatsApp have their own compression. वो अपने हिसाब से compress करता है चीजों को send करने के लिए. Facebook have their own compression. वो अपने post के लिए अलग से compression डालता है.
So that's the reason अगर आपको real size image भेजना होता है, actual quality भेजनी होती है, आप क्या करते हैं? You made it documents and send to it, right? So it means every kind of compression have, कोई भी compression आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका data loss हो रहा है basically. So compression means to compress the data, to play on certain kind of media player. So one more thing here I'll mention, कि if you guys have watched films on CD, right? CD पे भी देखा होगा, DVD पे भी देखा होगा, and Blu-ray DVD पे भी देखा होगा, right? So you guys have ever feel any kind of difference in terms of quality once you're watching on CD and DVD and the what is the Blu-ray DVD? Have you ever feel any kind of differences? कुछ देखा है? If anyone noticed or anyone ever watched that? चलिए, नहीं देखा है, that's okay. बताता हूँ. CD, DVD and the Blu-ray, right? different platform पे जिसपे हम, I'm sorry, medium पे जिसपे हम देखते थे. सबसे लेस्ट क्वालिटी जो होती थी that the CD है, right? उससे ज्यादा जो होती थी the DVD, और सबसे अच्छी क्वालिटी जो था the Blu-ray DVD. It means in तीनों format the film will remain same, right? Once you copying through your system, जिसमें कि एक क्वालिटी रखी है, उससे आप CD में डालोगे, DVD में डालोगे, और या sorry Blu-ray DVD के लिए बन रहा होगा. But the thing is that they have the different compression. उसके अलग अलग compressions थे. So due to compression quality खराब होती थी और quality में differences होते थे, and there is a different kind of qualities. If you guys have the many kind of media player that you are using, कोई ऐसा media player है जिसमें आपको लगता है quality अच्छी आती है? कोई ऐसा media player है कि you are using, you know, VLC media player, there is certain another media player where you can feel it that इसमें ना video अच्छा चल रहा है, quality अच्छी आ रही है. The reason is your compression. And the simple, very simple things, if you guys have ever used camera and there is a certain compression, or you can say the extension .mp4 or MOV, right? Suddenly देखते हो, if you record on MOV, the file size will be bigger. ऐसा कहीं से नहीं है. Look, ऐसा कहीं भी नहीं था कि once you start recording on MOV, it's become 4K. Resolution has remained same. If you are shooting on full HD 1920 1080 in MOV, it will remain same 1920 1080 in MP4. ऐसा नहीं कि MP4 में वो कम हो गया और इसमें जाके वो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं था. Resolution has remained same. Whatever the files है, जो भी आपने चूज किया था, सारा वही था. कलर प्रोफाइल वही था. Each and everything will remain same. You just only change one thing, that is your compression. आप MOV से MP4 पे आ गए. And instead of MP4, you just choose MOV, right? So what these all things are? ये सारे क्या है? ये compression है basically. आपकी मीडिया फाइल को compress कर दी है, right? जैसे ही compress होगा, you will lost your data or the quality, right? Compression से quality खराब होती है. If you watch it on the Facebook पे, जब आप फोटो क्लिक करके अपलोड करते हो, फिर बाद में वही फोटो जब आप डाउनलोड करते हो, see the difference is not in terms of quality, also in terms of size of the images. KB में रहता है, आप अगर WhatsApp से फोटो भेजते हो, इस पे भेज लो. Why? Because they have their own compression that they used to reduces the quality. The quality reduces them. It means same will be there if you choose the compression method in MOV or MP4. MP4 है, वो ज्यादा कंप्रेस करेगा, MOV कंप्रेस करेगा, वहां भी कंप्रेशन है. Is as much as simple कि if you guys have used your जो स्टिल्स के लिए यूज करते हो, लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी यूज करते हो, इन टर्म्स ऑफ क्या होता है? इज द काइंड ऑफ कंप्रेशन, राइट? ये एक तरीके का कंप्रेशन ही तो है ना, कि लार्ज में आपका फाइल साइज 30 MB का था, now it's become the 20 MB, now it's become the 10 MB, now it's 5. The reason there is a certain condition that you are applying over there. आप एक कंप्रेशन था जो आप अप्लाई कर रहे थे, राइट? तो जो DSLR का कंप्रेशन है मेथड है, और जो सिनेमा कैमरा का कंप्रेशन मेथड, दैट इज डिफरेंस, राइट? दैट इज वेरी डिफरेंस. बिकॉज whatever processor that we are using, हमारा क्या है?
हमारा कोई भी चीज बन रहा है किससे बन रहा है, वॉट एवर इन टर्म्स ऑफ डीएसएलआर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इज द इमेज प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू बन रहा है, राइट। वो एक इमेज प्रोसेसिंग होके जा रहा है, वो वाला सॉफ्टवेयर इसमें है। वीडियो का क्या है, सिनेमा कैमरा क्या है, वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। सो let's read it once. The image data that is processed with a DSLR camera is typically subject to a high degree of compression. This means that the camera encodes the image information through algorithm approximation, where it partially discards some of the raw data in order to store the captured image on a smaller data files. Cine cameras, on the other hand, have the option of storing image data with no compression, also known as RAW, or with minimum compression on an intermediate codec, which often referred as the log. The advantage of little or no compression is that it provides much greater bandwidth for manipulation in the post-production color grade, whereas images stored with high compression are more likely to degrade and look very artificial when subject to extremes of color management. Okay, thanks to that, here the mention is कि your cinema camera can record raw. Now you guys can ask me कि हमारा भी तो है camera, DSLR also record the raw, but ये raw नहीं है. Basically, it's the kind of raw, it's a log profile that our DSLR have been using. So what is the difference between raw and whatever the file says that we are using, or whatever the compression that we are using? Raw is basically uncompressed data. RAW means there will be no compression at all. Whatever the later data coming through the lens on your sensor, it will remain same. There is no compression at all. वहां पर कोई compression नहीं. Even if you can change the white balance, you can change it, each and everything in the post if you are recorded in the raw data. But the thing is that in our DSLR, either MOV, MP4, or whatever the file says, the Sony have the AVCSD. So different camera have the different file format. So it means to open that raw file, you need a certain extension, and that extension have that kind of compression. So in DSLR camera have the more compression in terms of अगर cinema camera की बात करोगे, cinema camera की format की बात करोगे, उसके compression इसके compression में बहुत differences हैं, बहुत ज़्यादा differences हैं. इसके एक difference को मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि you got that bit rate. It's called the bit rate. You guys are copying your data on system or something else, either the video file or the audio file, and what the image says, right? You are just transferring your data from your laptop, from your pen drive to your laptop, right? Have you seen that they are just writing timing over there, right? Here 2 minutes 24 seconds दिखा रहा है, right? So how they calculated it? Actually, it's calculated by the bit rate. वहां दिखा भी देगा नीचे जाओगे तो आप कि 4 Mbps है, 10 Mbps है, whatever the size it is. कि क्या Mbps आपके speed है. So it's depend upon your processor, it's depend upon which kind of USB you are using. So basically, the bit rate is the rate of information in which your video is streaming or downloading, or you can say you are recording. तो suppose करो तुम 1 मिनट का वीडियो बना रहे हो for the cinema camera, 1 मिनट का वीडियो बना रहे हो for the for the DSLR. दोनों में differences क्या होगा? Your image will be, in DSLR it could be the 10 bit, 20 bit, right? Cinema camera क्या होता है 300 bit, 400 bit, 600 bit, right? 1 सेकेंड में इतने बिट का डेटा जा रहा है, उसकी ये स्पीड है. विद इन 1 सेकेंड इतना बड़ा डेटा इसमें स्टोर हो रहा है, या इतना बड़ा डेटा ये कैप्चर कर रहा है. सो बेसिकली एक चीज और यहाँ में मेंशन कर देता हूँ, वो आपको और क्लियर हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो रहा है. तो have you ever recorded any videos suppose करो कि full 90/20 1080 full HD रिकॉर्ड करते हैं, and you have the memory card that is 64 GB, right? And the same point of time, you just record a video that will be the 4K, and that the memory card is remains in that the 64 GB memory card, right? Now you are just trying to copy that data. Okay, दोनों डेटा एक को एक 64 GB कार्ड में आपने क्या किया, फुल HD रिकॉर्ड किया, another 64 GB में आपने क्या किया,
आपने full HD रिकॉर्ड किया and now you start copying those data. कौन सा डेटा जल्दी कॉपी हो जाएगा? If anyone have answers, write it. Which data you can copy it faster? 4K और full HD. दोनों 64 GB फुल हो गया है. सर 4K The 4K reason? सर उसका बिट रेट ज्यादा है, राइटिंग स्पीड बिट रेट ज्यादा है. बिट रेट ज्यादा है तो लेट से होगा ना. आई थिंक मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना. अच्छा कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे हो मैं आई गेट इट. बिकॉज 4K have the more bit rate than the full HD. Now the things is that space is remain same. 64 GB 64 GB दोनों का स्पेस तो सेम है. रिकॉर्डिंग तो उतना ही हुआ ना, 64 GB 64 GB. बट व्हाट मेक्स डिफरेंस? डिफरेंस मेकिंग बिट रेट. कि भाई मेरा बिट रेट 200 MBPS का था, ये 60 का ही था, तो 60 वाला तो जल्दी ट्रेवल होके फुल HD कर देगा, राइट? 60 MB वाला क्या करेगा? फास्टेस्ट ट्रेवल हो जाएगा. Not the 200 Mbps and whatever the size it will be, right? The bigger it is. So क्या होगा? Bit rate ज्यादा होने से क्या होगा? टाइम ज्यादा लेगा. So here बड़ा सिंपल सा रूल होता है in terms of डिजिटल में. अगर बात करोगे, bigger is better, better the bit rate, greater the quality is. सिंपल कहते हैं, bigger the bit rate, greater the quality is. कि कहीं पर भी जहां भी बिट रेट आपको ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी होगी. एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, ये जो सारे जो कंप्रेशन, ये सारा बिट रेट ही कंप्रेस करता है. सो इफ यू गाइस हैव एवर एडिटेड वीडियोस, जब एक्सपोर्ट करते हो उस टाइम दिखाता है बिट रेट. अगर किसी ने एडिट किया है आप में से तो दिखाता है बिट रेट कि यू आर एक्सपोर्टिंग फॉर द मोबाइल फोन, उसका बिट रेट अपने आप कम हो जाएगा. एक्सपोर्टिंग फॉर द यूट्यूब या जो भी सारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एंड एवरी प्लेटफॉर्म हैव द डिफरेंट बिट रेट. कि सबका डिफरेंट डिफरेंट बिट रेट बना हुआ है, राइट? सो बेसिकली सबका अपना अपना कंप्रेशन बना हुआ है कि विच काइंड ऑफ वीडियोस दे गोना प्ले. सो in terms of DSLR or the video camera, sorry, cinema camera, that's the main difference is the compression. DSLR have the bigger compression, cinema camera have the raw and even the lower compression. ज़्यादा compression नहीं होता है. So the पहला is, the first point is the compression. First differences is the compression. Second one is the dynamic range. The reason is dynamic range, that I think I have already discussed what is dynamic range is. Right? किया है नहीं किया है? क्या है सर? किया है ना डायनामिक रेंज. तो बड़ा सिंपल से डायनामिक रेंज एक लाइन में फिर मैं बता देता हूँ. The capacity to read brightest bright and the darkest dark in a scene, right? That's the dynamic range, right? कि आपने brightest bright and darkest dark दोनों को at the same time आप देख रहे हो, right? देखना मतलब आपको दोनों का टेक्सचर दिख रहा है, that is called the dynamic range. So obviously your cinema camera have the greater dynamic range than whatever the अभी जो आपके DSLR आते हैं, DSLR कैमरा, they are claiming कि मैं 14 स्टॉप बना रहा हूँ, 15 स्टॉप बना रहा हूँ, but literally honestly they are claiming, right? तो क्लेम करते हैं on which level आप और हम पता नहीं कर सकते हैं. जब लिटरली आप शूट करोगे at that point of time will notice no, it's not working for the 14 stop and the 15 stop. So the main difference is also the dynamic range, कि उस रेंज को कैप्चर करता है, right? जिसमें shadows and highlights, there's a bigger difference between shadows and highlights, even they can capture those data. तो क्या कह रहे हैं? The higher the dynamic range of a given camera, then the better its ability to retain more visual footage in the dark or in extreme light, right? Most DSLR features a maximum range of about 11 stop, while cinema camera like Arri Alexa have about 15 stops of dynamic range. A wide range allow you to have increased latitude during post-production because you will have more visual information. A DSLR camera can be quite an outstanding camera when recording in location where you have control over the lighting used in the film production. However, a cine camera will come in handy when in a situation where you have no control over the lighting, such wide outdoor shots under extreme dark or light areas. The things is that here we are not mentioning is you are not able to record through the DSLR, right? If you can manage the lighting, if you know the manage the lighting means you must have to know the dynamic range of your camera.
So as earlier I have mentioned, you have to know the limitations of camera. People are making films through the phone, mobile phone. The reason they know the limitations of mobile phones, they know the dynamic range of mobile phones. So उसी में आर्टिफिशियल लाइट के हेल्प से वो लोग लाइटिंग आर्टिफिशियल लाइट के help say you can create those things. You know the dynamic range of your camera. According to that, you will use that kind of light. कि उसी के अंदर तुम उतनी ही लाइट यूज करोगे जो उसके डायनामिक रेंज में आता है और either you will design the shots that will be in control of those dynamic range. कि तुम्हें पता है 6 stop 7 stops का है. They will do lighting only for the 6 or 7 stop. तुम जो लाइटिंग करोगे या कोई सेट बनाओगे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, राइट? So according to your camera, you can set it. So I'm not mentioning that the a DSLR camera is bad. When you can shoot it, but you must have to know the limitation of it. So basically, cinema camera have the greater dynamic range. DSLR camera have the lower dynamic. That's the difference. So two things that we have discussed. One is compression. The another difference is the dynamic range. Now the third one. Yeah, the electronic sensors present in the digital camera provide ISO measurement, which explains the difference sensitive to light. The least measurement is usually at ISO 100 with a difference of 1 exposure value of light between the measurement. At ISO 100, a camera has low sensitivity to light. Through the image quality, Y will be quite high. You will therefore need more light to capture well-exposed image while working with such a low ISO. And ISO 6400 need a very little amount of light to attain a well-exposed image. Through the resulting image will be low quality due to visual noise. It's important to note that when for recording video at ISO 6400 on a cine camera, it has great price. Ideal setting on a DSLR. It means they are talking about the ISO range. In DSLR cameras, if you guys are using, after 800 or 1600, even you can feel a grains, right? So that's the one reason in low light conditions, it's very difficult to shoot with the DSLR cameras. DSLR camera have the more noise. Once you increase the ISO, you can feel there is a noise, right? So it will degrade the quality of your images or your videos. But for the cinema camera, most of the camera, if you guys have ever used or heard about it, the ISO range is started from the 400. It means the base ISO is 400. So see how sensitive the sensor is. कि वो लाइट को किस रेंज तक लेके जाएगा. Your camera has started from the 100. Some camera started from the 50. Most of the DSLR camera started from the 100, right? Cinema camera देखो 400, 800 से start ही होते हैं, है ना? Because तो उसके रेंज जितने ज्यादा बढ़ेंगे, ISO के ग्रेन्स उतने ज्यादा नहीं आएंगे in compared to DSLR camera. If you compared it, DSLR में जैसे ही ISO बढ़ाओगे, you can feel that there is a grains. So in terms of low light conditions, कई बार सिनेमा कैमरा सिर्फ कैंडल लाइट यूज करके तुम लिट अप कर सकते हो, but for the DSLR you must have to use the external light to lit up or to create that kind of mood, right? सिर्फ कैंडल लाइट जलाने से लाइट नहीं हो जाएगी. You need extra light for it, but cinema camera have that kind of range कि तुम ISO थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, you will not feel the grains. But in DSLR, if you increase, you can feel the grains. एक चीज में देखो, see this image ना, इस इमेज में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? See, in two images, your camera is in movement, right? In third one, your camera is static. क्या हो रहा है? Did the building is appear slanted or not? Is that building is appear slanted or not? Yes, sir. Okay. This effect called the Zello effect.
ये लोग इफेक्ट करते हैं इसे, और इसका रीजन है आपका शटर, योर शटर। सो बेसिकली अगर हम डीएसएलआर कैमरा की बात करेंगे तुम कहोगे यहाँ तो डीएसएलआर कैमरा में कौन सा शटर होता है? फिजिकल शटर, फ्लैंक फोकल शटर कहते हैं उसे। दैट इज सीधा किसके आगे रहता है? फ्लैंक के आगे रहता है, आपके सॉरी सेंसर के आगे रहता है। इट्स कॉल्ड द फ्लैंक फोकल शटर, दैट द फिजिकल शटर, राइट? बट वंस इट विल बी द वीडियो, वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो, क्या होता है? So rotating shutter. Electronic shutter started working, right? One second, guys. Okay, so once you start recording videos, either in the DSLR cameras, that the physical shutter is not working, na? हर एक टाइम वो shutter ऊपर नीचे तो नहीं होगा, right? So there will be the electronic shutter that they start working. So electronic shutter कैसे काम करेगा? As you know that because shutter तो ऊपर हो गया, electronically काम करे, it means that the whole light will the produce at once. Suppose you are shooting at 25 fps, right? 25 frame पे shoot कर रहे हो, for the 1 second you need 25 frame to expose, and for every frames what you need, if you want to capture the 25 images, what you need to do? You have to release your shutter 25 times, right? तभी मिलेगा ना 25 times light आई, light गई, light comes, light blocks, light comes, light blocks, right? Then you got the 25 images. Suppose light आती ही रहती, you will get only 1 images, right? जो कि light painting हो जाता। शटर के क्लोज होने के बाद ही तो एक इमेज आपका बना ना, right? Once the shutter is getting closed, you got a 1 image, right? So it need to be done 25 times, right? 25 times होगा तभी जाके you got the 25 images or whatever your frame rate is, right? At that numbers of time your shutter must be released. But ऐसा होता है क्या 25 टाइम आपके शटर रिलीज होते हैं फॉर द वीडियोस? No, sir. नो। द रीजन इज इट मींस इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होता होगा, राइट? इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होता है, एवरी फ्रेम गॉट इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड। सो इट मींस इफ द वन फ्रेम गेट चार्ज्ड, इट्स नीड टू बी डिस्चार्ज्ड। नहीं तो चार्ज के बाद ही चार्ज होगा, इज कंटीन्यूअस फ्रेम इट विल बी। So the thing is that in 25 frame, every time your one frame must have to charge, then discharge, again the another frame will be charged, then it will be discharged, then charge and discharge, right? So this process will going on, and this process में क्या होता है? As I mentioned, this is the electronic setup, right? और electronic काम कैसे करता है? There is a 2 types of shutter basically. One is global and another is rolling shutter. ठीक है, एक ग्लोबल शटर होता है, दूसरा रोलिंग शटर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शटर, किसी भी वीडियोस में, राइट? सो दो तरीके से परफॉर्म करता है, either it will be the rolling, either it will be the global. How shutter work? Okay, so as I mentioned, यहाँ नाम देखो क्लियर है, the rolling shutter. Rolling means what? Something will be rolled. Have you ever seen the scanner, guys? स्कैनर देखा है ना आप लोगों ने? स्कैन क्या करता है? रोल करता है ना? ऐसा देखा, ग्रीन वाला ऐसे घूमते रहता है, रोल करते करते आता है, फिर पूरा स्कैन करता है, यही होता है। सॉरी, प्रिंटिंग का भी रोल होता है। एक बार में प्रिंट निकलता है क्या आपका? नहीं ना। या फिर आपने स्कैनर देखा होगा, ऐसे लाइट्स उसकी ऐसे ऐसे रोल करती है बेसिकली। सो इन रोलिंग शटर्स, how the things gonna charge or getting charged, वो रोल होता है अपर लेफ्ट से नीचे तक आता है, लोअर राइट, है ना? ऐसे चार्ज होते हैं, ऊपर से नीचे तक आता है, ऊपर से स्कैन करते हुए नीचे तक आएगा। इसका मतलब whatever the light is hitting your sensor, shutter will not allot at once, वो स्कैनिंग लाइन में आ रहा है लाइट। once there is a rolling shutter, तो लाइट ऊपर से नीचे तक ऐसे आ रही है, और जो भी इमेज है, whatever the image is over here, उसको स्कैन करते हुए लाइट क्या हो रहा है, उस इमेज को कैप्चर कर रहा है। सो हियर मेंशन over here कि सपोज करो
कोई चीजें स्कैन हो रही है and there will be a certain kind of faster movement will be. क्या होगा? What happened? If the camera is in movement and one second, I'm showing you. So same things happen over here. Your camera is in movement. So क्या होगा? Whatever the upper part that will be exposed earlier, right? A lower part क्या होगा? थोड़ा आगे जाके expose होगा. होगा ना? Because of the scanning line, स्कैन होने की जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड तुम्हारे कैमरे की होगी, राइट? द कैमरा हैव द फास्टेस्ट स्पीड देन द व्हाटएवर द स्पीड ऑफ योर रोलिंग शटर. तो क्या हो जाएगा? थिंग्स अपीयर बैंड और नॉट. ये स्लांट अपीयर होगा. ओके, so we'll go it once and read it once then. DSLR features an electronic shutter which works through the use of the scanning approach, right? वो scan करके कर रहा होता है. Commonly referred to as a rolling shutter, the process involves continuously scanning the image at one from the top part of the bottom of the sensor. This technology is effective in enhancing the sensor sensitivity due to the reducing downtime required to capture light. The main disadvantage of using the rolling shutter technology is the increased potential of producing unwanted distortion in a given image. Such unpleasant image can occur when the subject moves rapidly, the camera moves in rapid motion, or during quick light flashes. There are several cine cameras like the Arri Alexa that use the global shutter technology instead of the rolling shutter. This technology allows to reduces chances of the jello effect common in moving object or handheld cameras. अब ये क्या करता है? ग्लोबल शटर क्या करता है? For the rolling shutter, what I explained, rolling क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे तक लाइट रोल होके आ रही है. So that's the reason if there will be any kind of movement or the faster movement, right? Either the camera or either the characters, right? So होगा क्या वो? half of the part or whatever the speed is totally depend upon which kind of speed is. तो मैं half part नहीं कहूंगा. जितना area at once it will be exposed. अब उस लाइन में जिस टाइम पे जितना आएगा, नहीं तो क्या होगा? बाकी दूसरे लाइन पे आएंगे. So that's the one reason your image looks banding. आपका image band होता है. But it won't happen with the global help of global shutter. Global shutter में ऐसा नहीं होगा. उसका रीजन है, रीजन ये है कि ग्लोबल शटर क्या करता है? इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग, टॉप से लेकर स्कैन कर रहा है, वो एट वंस चार्ज होल फ्रेम्स, राइट? वो एक ही बार में पूरे फ्रेम को चार्ज कर देता है. वो ऊपर से नीचे तक स्कैन नहीं करता. एट वंस इट विल गॉट द चार्ज. सो नाउ व्हाट हैपन? अगर एक ही बार में चार्ज कर देगा तो क्या होगा? इज देयर चांसेस ऑफ जेलो इफेक्ट और नॉट? क्या जेलो इफेक्ट आएगा? The reason at once the whole frame will be charged. So whatever movement, either the camera or either the character, it will be gonna record it, right? वो आराम से रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि वो स्कैन नहीं कर रहा है. Once you start scanning, then you feel there is a movement or half of the movement will record it in somehow another part and the half of the movement on the sensors another part. So that's create the feel of jello effect or the band effect, the slanted effect. So most of the cinema camera have the global shutter. So if you are shooting some fast motion subjects, right? कि moving object shoot कर रहे हो या higher FPS shoot कर रहे हो, so at that point of time DSLR have this kind of disadvantage that is called the rolling shutter. Nowadays few cameras comes up with the global shutter, but you have to pay more for it. Yeah, DSLR में भी आने लगा, but the main difference is that the most of the cinema camera have the global shutter and most of the DSLR camera have the rolling shutter. That's the one. There's another difference, not the one. That's the another difference. Yellow effect. Matter of fact, I don't have the example of it, but you guys can feel that. Have you ever feel the strips line? लगता है कि एक line, दो line, तीन line, well, the repeated line is over there.
When odd strips and patterns appear in your image, this is called a Moire effect. This visual perception occurs when a fine pattern on your subject messes with the pattern of the imaging chip of your camera and you see a third separate pattern. Because fewer camera are now occupied with an anti-aliasing filters, that's another thing. So you will see the Moire effect occurring more often these days, especially as a partial or architectural photographer. Have you guys ever seen that the lines is repetitive? कि line तो बने शर्ट पे line देखा होगा या कहीं पर भी ऐसे lines हैं. So line अपने आप को repeat कर रहा होता है, right? So that's called the Moire effect basically. It's called the Moire effect. Cinema camera में ये कम होता है. And also most of the cinema cameras comes up with the anti-aliasing filters. वो सेंसर के साथ ही लगा होता है, anti-aliasing filters लगा होता है. तो वो क्या करेगा, वो इमेज को उस पैटर्न, नॉट द इमेज बेसिकली, उस पैटर्न को इतना शार्प नहीं रहने देता है. बिकॉज आप डीएसएलआर कैमरा से जब शूट करेंगे इट विल बी नोटिसेबल दैट लाइंस वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है. इट इज वेरी नोटिसेबल, राइट. बट फॉर द सिनेमा कैमरास एक तो कम होता है. द अनदर रीजन इज दे हैव देयर ऑन सेंसर पे ही लगा होता है. इट्स कॉल्ड द anti-aliasing filters. There are different kind of filters. So anti-aliasing filters क्या करता है? Just the reduces the sharpness of that pattern. Image की sharpness नहीं खत्म करता. वो जो pattern की जो lines है, lines की sharpness को थोड़ा सा soft कर देता है. So वो जब line जब soft होगा, it won't visible properly. वो बहुत ज़्यादा intense दिखाई नहीं देगा, बहुत sharp दिखाई नहीं देगा. So that's the one reason cinema camera have that kind of features that DSLR don't have. That's the Moire effect. That we have discussed 5 points, right? So that's the main points. There's the many points. मैं थोड़ा बहुत और भी points को टच कर देता हूँ. Kind of और क्या हो सकता है? What could be else? किसी के दिमाग में और कोई आइडिया है क्या हो सकता है? What are the main differences? I'm not talking about the lenses right now. Cinema lenses. I'm only talking about the camera bodies. Right? और क्या Compatible. differences? Just write it. Okay, मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर देता हूँ. जैसे you can give an example of the housing of the cameras, right? Weather resist नहीं होता है because of air compatibility, you can say. It's yeah, compatibility, right? कि ये इतना handy use करना नहीं होता. You need something to hold it up, कोई tripod, monopod or something else, some other gadgets that can help, right? But उससे भी ज़्यादा main part क्या है? The main thing is housing. ये होता है कि for the cinema cameras आप record करते जा सकते हो, right? For 1 hour, 2 hours, 3 hours, camera record कर सकता है. It's easy, right? But for the DSLR camera, if you guys are using it, after recording a 4K videos or full HD for the 1.5 hours, you can feel that your camera body is hitting up. Because it's not meant for the videos only, it's also meant for the stills. So, आपने कहीं पर भी exhaust नहीं देखा होगा अपने कैमरे में, because there is a fan to make it cool down, right? कहीं fan होता है? नहीं होता है. Because body is very compact. So that's the one reason कि इतने ज़्यादा compact होते हैं कि वहाँ fan भी नहीं है. So सेंसर क्या होगा, हिटअप बहुत जल्दी होगा और वो क्या करेगा, आपका वीडियो रिकॉर्ड 1.5 आवर के बाद कई बार क्या होता है, सिग्नल्स देने लगते हैं. यू कैन फील द सिग्नल्स, यू कैन हर्ट द साउंड ऑफ इट. इफ यू आर यूजिंग कैनन कैमरा, सम कैमरास, योर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बार बार ब्लिंक करेगा आपको कि आपका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है. बिकॉज आपका कैमरा उसके लिए नहीं बना है कंटिन्यूअसली. यू जस्ट रिकॉर्ड इट फॉर द 2.5 आवर्स और 3 आवर्स. दूसरी चीज होती है लिमिटेशंस ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द डीएसएलआर कैमरा कम्स विद द less than the 30 minutes recording time, right?
30 मिनट से कम टाइम होता है, there is a business ratio, things involved in this one. ऐसा नहीं 30 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते. You need external recorder. Now the few camera comes up with that you can record 2.5 hours, 3 hours, right? But the main reason is if your camera will record less than 30 minutes, as in custom rules, right? It won't consider as in video camera. So video camera have the different customs duty. It depend upon country to country. Video camera have the different customs duty than the DSLR. DSLR camera का custom duty कम लगता है और video camera का ज्यादा लगता है. So any camera that is recorded less than the 30 minutes, it won't consider for the video cameras. वो consider किया था DSLR के. So that's the reason कंपनियां देखते हो बहुत सारी वो 29.59 seconds तक का ही देता है, उसके बाद अपने आप कट हो जाता है. तो इट्स वेरी obvious things कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई इवेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कट नहीं करना है, राइट, यू हैव टू रिकॉर्ड होल वीडियोस एट वंस. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डीएसएलआर कैमरास. उसके बाद बहुत हैंडी भी नहीं होता यूज करना. आप यू नीड एनी गैजेट्स, यू नीड एनी सपोर्ट, राइट. तो दूसरा इसका क्या हो गया, टाइमिंग का मसला है. पहला क्या हो गया, उसकी जो कंपेटेबिलिटी है यूज करने का, वो हो गया. दो चीजें ये हो गई. और क्या हो सकता है, sensor size didn't matter too much right here. आपने लिखा sensor size, yeah, and aspect ratio, Shivam, right. Look, aspect ratio that we can consider because the most of the DSLR have only 2 and 3 aspect ratios, but the cinema camera have the more options. That's the thing. Cinema camera have the more options. You can write it down. इसमें ज्यादा sensor size doesn't matter. Sensor इसमें भी full frame आता है, उसमें भी आता है, इसमें कोई ज्यादा matter नहीं करता है, right. Yeah, battery life on DSLR, battery life we can't use V-mount. Yeah, right, John, अब आ गए हैं भाई. अब आप बैटरी पैक लगाइए, कुछ भी लगाइए, अब आ गए हैं कि आप चीजें यूज कर सकते हैं. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, एक और चीजें हैं, इट्स फॉर द साउंड, राइट. ये काफी वो नहीं है, साउंड के लिए फ्रेंडली नहीं है फॉर द डीएसएलआर कैमरा. दे हैव ओनली 3.5 जैक, बट द मोस्ट ऑफ द सिनेमा कैमरा हैव द एक्सएलआर. सारी चीजें साउंड के लिए ज्यादा ऑप्शंस डीएसएलआर में है. इवन फॉर द मॉनिटर्स, टेक द आउटपुट, there's a many options, right. So that's the one reason they have the XLR, right. और monitors के लिए अलग से options होते हैं. तो there are the many options in terms of cinema cameras. DSLR have the less options for the sound, right. आप में क्या होता है, एक से 3.5 का जैक होता है, उनमें दो एक्सएलआर के पॉइंट्स होते हैं. ऑन सेट रिकॉर्डिंग या कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो it will be helpful. But the things is that, guys, look, there's a many things. I just discussed the 5 things. And then maybe if they can ask the 5 things, it will be remember, or the many things that you know, the what will be the main differences, you can write it down. ये 5 ऐसा नहीं कि ये specific ही होगा, but the mainly difference is that the 5 or 6 things. वैसे देखने लगोगे तो बहुत सारे differences हैं, but the mainly that I have discussed. Okay. So guys, 8:05. So just take a 10 minutes break. We'll resume by 8:15. Okay.
Okay, guys. Give me 1 second. Okay, the earlier that we are discussing the compression, right? Our DSLR camera have the different compression or more compression than the cinema camera. Okay. So here I'm mentioning there's a many kind of the compression that is working. Many kind of file format that you guys have been seeing that have the certain compression. Patch 264 देखते हैं जो भी इतने जितने भी compressions हैं. Apple ProRes or जो भी every compression have every extension have the certain compression. But the thing is that how they compress the data basically. वो compress कैसे करते हैं in terms of quality degrade कैसे होता है in terms of quality compression कैसे होता है. So what's the method that they are using, right? Which method? What is method? या आप MOV use करते हैं MP4 use करते हैं in terms somehow they are just reducing the information basically, right? कि information reduce कर रहा होगा और information में क्या है light, right? The colors information वही कम होता होगा और क्या कम होता होगा, right? तो उसका तरीका क्या है उस कंप्रेशन का कि कैसे वो कंप्रेस करता है. हियर कैनन एक मेथड यूज करता है और बहुत सारे कैमरास हैं जो करते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं. इट्स कॉल्ड इंटर फ्रेम कंप्रेशन और इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन. कि फॉर द सेम MP4 इवन सेम MOV और सेम MP4 हैव टू काइंड ऑफ कंप्रेशन. दो टाइप के कंप्रेशन हो सकते हैं, इंट्रा फ्रेम एंड इंटर फ्रेम. इंट्रा और इंटर में डिफरेंसेस क्या होगा? डिफरेंसेस होगा साइज का, डिफरेंसेस होगी क्वालिटी. बट ये क्वालिटी नोटिसेबल नहीं होगी, बट एट द टाइम ऑफ एडिटिंग, राइट, ये नोटिसेबल होगा. सो हाउ इट वर्क्स दैट वी डिस्कस. Interframe compresses each frame based on the information contained in the frames before and after. It groups a certain number of frames together before compressing. Intra-frame compress each frame individually, ignoring whatever is happening in adjacent frame. It means दो चीजें जो आपको यहाँ पर पता चली है. The first thing is intra-frame क्या कर रहा है? Compress कर रहा है each frame individually. सारा frame individually compress हो रहा है. So it means if there will be 24 frame, right? If anyone of you have ever edited any videos, you guys know the key frame, right? कि जहां से आप नेक्स्ट फ्रेम उठा सकते हो, जहां आप उसको उस फ्रेम को काट सकते हो, वहां से तीसरा फ्रेम ऐड कर सकते हैं, दूसरा फ्रेम ऐड कर सकते हैं. इन एडिटिंग हैव यू सीन दैट द एरो से होता है, दैट्स कॉल्ड द की फ्रेम, राइट? So basically once you are recording an intra frame compression, it means every frame is key frame. Every frame will be the key frame. वही ऊपर आपने पढ़ा वो क्या कर रहा है कि each frame based on the information contained in the frames before and after. मतलब अपने फ्रेम से एक पहले भी और एक बाद भी, और ये भी होता है दो पहले भी दो बाद भी, ऐसे भी हो सकता है, राइट? तो सपोज करो क्या हुआ, एक फ्रेम के कंप्रेशन के साथ दो और फ्रेम कंप्रेस. So basically if there will be the 24 frame, it means there will be only 8 frames, 8 key frames basically जो कि कंप्रेस होगा, राइट? वहां पर क्या है कि 24 के 4 फ्रेम का अपना कंप्रेशन है, इंडिविजुअल कंप्रेशन है. यहाँ क्या एक के साथ दो और मर्ज है, राइट? तो एक के साथ दो और लगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी और ज्यादा खराब होगी. इट विल रिड्यूस द मोर क्वालिटी, right? But in terms of editing, once it comes for the editing table, you need to edit frame by frame. At that point of time, you need intra-frame compression because you have an options to edit one by one. Each and every frame is your key frame basically. So there will be the 24 key frame. So it's easy for you to color each and every frame, to grade each and every frame separately. But for the intra-frame compression or inter-frame compression, there will be only 8 frame. 8 frame ही आप वो कर सकते हो, edit कर सकते हो, because 8 frame is key frame basically. सर ये की फ्रेम कैसे डिफाइंड होता है? क्या की फ्रेम कैसे आप एडिट पे जब लगाओगे अपने सिस्टम को तो की फ्रेम दिखा देगा आपको कि कितने की फ्रेम है. थंबनेल जो दिखती है
या आपको एडिट पे दिख जाएगी, देयर विल बी द की। क्या कह रहे हैं? द कैमरा सपोर्ट बोथ इंट्रा फ्रेम एंड द इंटर फ्रेम कंप्रेशन कोडेक। द इंट्रा फ्रेम वर्जन विल ऑलवेज रिकॉर्ड विद अ हायर बिट रेट। द रीजन, उसमें क्या एक के साथ तीन तीन जा रहा है, यहाँ एक का अपना अपना इंडिविजुअल कंप्रेशन है, सो दैट्स द रीजन इंट्रा फ्रेम विद अ हायर बिट रेट। इंट्रा फ्रेम हमेशा हायर बिट रेट। अब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, which means given a certain capacity memory card, selecting intra-frame compression in camera means the camera operator can record less video duration than he had selected to use an interframe। और बड़ा में कैनन में जो ऑप्शन है उसमें अगर आप एडिट करके रिकॉर्ड करके देखते हैं, if a camera can record on interframe compression for 1 hour, right, जितना 1 hour 1 घंटे रिकॉर्डिंग में जितना कैपेसिटी लेगा वो, ठीक है, जो इंट्रा फ्रेम में सपोज करो फॉर 1 hour रिकॉर्डिंग फॉर द इंट्रा फ्रेम, उतने में 1.5 hour रिकॉर्ड होगा इंटर फ्रेम कंप्रेशन। मतलब 1.4 टाइम का दोनों में जो है डिफरेंसेस रहता है, बट विजुअली आपको दिखाई नहीं देगा डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हैं विजुअली नहीं दिखाई देगा। बट इफ यू नीड टू वर्क ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन। एंड इफ यू गाइस आर यूजिंग इट, एक ऑप्शन आता है उसमें कैरन में ऑल आई और ऑल आई पीबी, राइट, ऑल आई एंड ऑल आई पीबी। ये आई मैं इंटरलेस और प्रोग्रेसिव वाला नहीं कह रहा हूं, ये आई डिफरेंट है, ये कैनन में ऑप्शन है, कैनन इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स, all I and all IPV, different camera have the different compression, name is different, but the compression process will remain same, either it will be the infra or either it will be interframe compression, but name will be different, it's depend upon the manufacturer। But here it is कि Canon ने क्या use किया, if there will be the all I, it means this is the intra frame compression, it means higher bitrate video will be recorded once you selected all I, उसमें हायर बिटरेट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देयर विल बी द ऑल आईपीबी, इट मींस लोअर नंबर ऑफ बिटरेट विल बी देयर, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी इन टर्म्स ऑफ इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन, बट बोथ विल कंप्रेस योर फ्रेम। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंट्रा में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपको रॉ फाइल दे रहा है, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं रॉ नहीं कह रहा हूँ, आपका एमओवी या MP4 होगा। ओनली द थिंग्स इज दैट मेथड ऑफ कंप्रेशन दैट यू हैव चेंज्ड by selecting all I and all I PV। So these are the examples। आप जो जितने भी वो देखते हो ना, जो एक्सटेंशन होते हैं, so these are the interframe or intraframe। The left hand side is interframe। जितने भी वीडियोस में आप अगर ये एक्सटेंशन देख रहे हो, MPG 4 MPG 2 AVCSD या XD Cam, XAVC, H264, ये सारे इंटरफ्रेम कंप्रेशन है। किसी वीडियो में अगर ये लगा हुआ है, इट मींस अगर आप टाइमलाइन पे लोगे, इट मींस ग्रुप ऑफ पिक्चर्स विल मेक अ की फ्रेम, राइट, देयर विल बी द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स जिसका कंप्रेशन एक साथ होगा। सो लेफ्ट साइड वाले जितने में दिस इज इंटरफ्रेम। इंट्राफ्रेम में कौन कौन सा है? एंड जेपीजी, जेपीजीस, बंचेस टुगेदर, प्रोरेस, एप्पल का जो अपना है, DNX XD, ऑल आई, सिनेमा DNG, है ना। तो ये जितने भी हैं, जस्ट राइट इट, या ये लिख सकते हो। और बेसिकली कैमरा में भी वो फंक्शंस होता है जहां आप सेलेक्ट करोगे तो कई सारे दिखा देते हैं, राइट। सो ये जो भी कंप्रेशन है, ये वीडियो क्वालिटी को जब आप पहली टाइम देख रहे हो, बेसिकली दोनों को कंपेयर करो, विजिबली अननोटिसेबल होता है, but once it will be on editable, at that point of time you can feel that there's a differences when it's time for editing or post processing, right। post process में कोई color grade कर रहा है, कुछ कर रहा है, at that point of time you need a frame that have their own compression। वो हर एक individual frame have their own compression, every individual frame have, right। so right वाले जो है वो इंट्रा फ्रेम है, लेफ्ट वाले जो है वो इंटर फ्रेम। चलो, सो कंप्रेशन का एक बेसिक आइडिया लग गया आपको कि हाउ इट कंप्रेस द वीडियोस आइदर इन DSLR और आइदर इन सिनेमा कैमरास। सिनेमा कैमरास में भी ये इंटरफ्रेम का होता है, ये जो आप S264 देख रहे हो ये भी होता है, राइट, और DNX SD ये भी होता है। आपके क्या कहते हैं, DSLR में भी दोनों होते हैं,
ऑल आई भी होता है, ऑल आई पीवी भी होता है, इसमें इंटरफ्रेम भी होता है, इंट्राफ्रेम भी होता है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. नाउ यू कैन आस्क मैं कौन सा चूज करूं. इफ सपोज यू आर डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री और किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, इवेंट शूट कर रहे हो, राइट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो दैट वी डोंट नीड अ पोस्ट प्रोसेसिंग, मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है पोस्ट प्रोसेसिंग. So at that point of time, you don't need to record on all I because it will only consume more space, right? ये ज्यादा स्पेस सिर्फ कंज्यूम करेगा, इट वॉन्ट वर्क बिकॉज दोनों की क्वालिटी दिखने में सेम ही है. एट द टाइम ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग जिसमें करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट. कि रॉ हमेशा शूट करते हो क्या इमेज में? नहीं ना. रॉ हमेशा इमेज में शूट करते नहीं करते हैं. इट्स टोटली डिपेंड वंस द क्लाइंट नीड इट कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन करना है इसका. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you have just selected to shoot on raw because you know that in post you have to work more. So that's the reason you choose the raw. So same thing with this file format or with this extension. Choose your extension wisely. What is needed, what is not, because you know the data is taking too much space. So just think before selecting a file size. ये किस लिए तुम कर रहे हो. So I thought कि थ्योरी ज्यादा हो गई है. So let me discuss few question now. एक दो कुछ क्वेश्चन है जो हमने बनाए हैं. So we can discuss on it. And the last week that no, S422 is not the extension. It's not the 422 is something different things. ये जो 422 जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो कुछ और है. That's the chroma subsampling it is. Once I will discuss the colors at that day, I will discuss that the chroma subsampling, how it works. The 422, 420, 44 is something different. It's the also kind of compression, but that they use different method for it, right? ये जो आपने क्वेश्चन किया है वो क्रोमा सबसैम्पलिंग से रिलेटेड है. So we'll discuss on that. Okay, so last week that what I was discussed discuss on film, that is taxi driver, right? Taxi driver. So for our next class, maybe it will be the Friday or Saturday. You guys will got link for that. On that day I will discuss on the films, right? Because well, that classes it will be not more technical, right? So always I just took 2 or 3 questions on which I will discuss on it. Which kind of question that maybe will comes. So here there are 2 questions that I will discuss today. Okay. So क्या questions? How lighting of an image can give it depth and shape and bring it alive as a real world. Right. The question here. And the second one is a character watching TV. So how would you like the subject to look like the TV is lighting? So basically, we are talking about the source light. Okay. Third one is what will be your approach in lighting when people move around in the scene? Okay. So I wanted to start it from here, right? So the idea lag jayega overall. So, okay, what will be your approach in lighting when people move around in a scene? Very simple question से आपको पता चल गया होगा. We are talking about the wider scene. If the character will move, it will be wider, right? Or maybe for a second you just think like that, नहीं है तो close में मैं move करवा रहा हूँ. But at least area will be wider, right? Movement का feel कब आएगा? जब you just place from one place to another place, right? You move from one place to another place, then there is a sense of movement, right? The movement का sense तभी आएगा.
तो दोनों सिचुएशंस ले सकते हो आप, either it will be the wide shot. So क्या wide shot or long shot that show a large part of location can be harder to light than a close-ups because of the greater area to recover and the problem of hiding lights and light span. Wide shot often involve people moving from one place to another, which adds the challenge of providing good light in several different parts of the set. So if it will be the wide shot, it's very difficult to maintain the continuity of light, basically, that we are talking about. And it's very difficult to light up whole areas, right? For the close-up, it won't difficult because छोटा सा area, face है, characters and the background, and that's it. But in wider shot, there's a many things that will be in your frame, right? So to maintain the continuity of the light, it's very necessary to judge the light. Okay, the light आप कहाँ से रही है, किस type की lighting करे. Suppose for an example, it will be daylight, right? And what we discussed, always we are not discussing about the artificial light. What we are trying to create, if suppose it will be the outdoor, we'll just create the light is coming through the sunlight, right? The sunlight से light आ रही है, so source is natural, right? But every time it's not possible to shoot in daylight, right? Or also in sunlight, if you start shooting in the like the natural light, it won't necessary that the intensity of light will remain same from one shot to another shot. Maybe cloud आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो many times you feel the problem. So suppose you are doing lighting. A question क्या है? What will be your approach in lighting when people are move around in this? अगर lighting के बारे में question पूछा जा रहा है हमसे कि what you will do? Okay, the things is that it will be wider areas. And you have to replicate that the daylight is coming. The one problem with when you are doing the daylight is to create a fall off, basically, right? Let's started with it. Yeah, fall off. Fall off क्या होता है? Fall off the intensity of light in the certain zone, right? सन का fall off कभी change होता है क्या? कभी देखा आपने कि आपके 6th floor पे light ज्यादा है और नीचे light कम आ गई है? Intensities remain same, right? Here, have you feel that here it is more brighter, here is the less brighter? Sun में ऐसा feel नहीं होता ना? नहीं होता. But once you are using artificial light, look, it's very similar कि अभी मैं जैसे ये light है मेरे सिन में और मैं close जा रहा हूँ. You feel that the intensity is higher, right? और suppose आपके पास ही कोई light है जिसको towards the light, you can feel the intensities keep changing. Change हो रहा है ना? Intensity change हो रहा है basically. तो sunlight में ऐसा नहीं होता. तो once you are using a some artificial light, right? So if your character start moving, आपने कहीं ऐसा light लगाया तो light की तरफ character जाएगा. So at that point of time, anyone can recognize through the intensity, through the fall off, that the light is coming through with this way. इधर से light आ रही है, so किसी को भी पता चल जाएगा due to fall off कि यहाँ पर light ज्यादा थी, यहाँ light, sorry, यहाँ पर light कम थी, आगे जैसे ये light ज्यादा हो गई. You must have to take care of those things. कि fall off एक होना चाहिए. So that's the reason you have to use bigger light in terms of intensity. Generally, wide shot should be lit to establish mood and to cover the actors. Blocking proper facial lighting is a lower priority. Keep in mind that the eye is naturally drawn to light areas of the frame, thus the area in which the actor moved is normally lit slightly brighter than the background or extreme foreground. Flags or nets can be used to diminish the light falling on unimportant areas such as board of wall. Much of the mood of the shot is established by the relation between the brighter action area and the darker background. Try to maintain this balance when you change camera position or lighting. It means whenever there will be the wide shot, there will be the many things that is seen, right? The properties, any other elements. So your main center of interest will be your character. So here we're mentioning it, try to put little bit more light than the characters, because as in our audience, the first things that we started looking is the brighter areas. What है बड़ी बड़ा सिंपल है, तुम्हारे फ्रेम में कहीं से भी कोई ब्राइटर एरिया दिख रहा है, सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है तुम्हारा? ब्राइटर एरिया पे जाता है.
So basically, put more light, little bit more light on the characters, and then there will be the less light on your properties. So क्या होगा as an audience? The first attention कहाँ जाएगा तुम्हारे character पे जाएगा, because of the light, because of the brightness, right? Because your character have the more light. So try to balance those things. कैसा ना हो कि background पे बहुत ज्यादा light डाल दिया है, the first attempt will goes to the background. क्या ये brighter area दिख रहा है? So your center of interest will be missing. तो ये नहीं होना चाहिए. According to lighting, आपका ऐसा हो white shot में. There is a many things, many properties is there. Have you guys seen the this films? Godfather ही ले लो एग्जांपल में, white shot दिखाते हैं ना. But have you seen the जो contrast है या जो brightness है वो character पे या उसके face पे, not for the background, कि background पे ज्यादा light दे दी. So that's the reason there is a brighter zone, there is a white shot, but the thing is that the जो center of interest है वो particularly ज्यादा brighter दिख रहा है in terms of background or the properties. When you light anything, it's usually more interesting to the pools of light in areas that are relatively dark than to have flat even illuminate throughout the frame. Pools of light also create a greater feeling of depth. Corridor, for example, seems longer in bright and dark areas alternate. Use fill light to provide illumination between the brighter areas. ये कह रहा है कि अगर the white shot है उसको सबसे पहले किस चीज से create किया जा सकता है? To create a sense of depth, right? और sense of depth कैसे create होगा? There will be the foreground, there will be the midground, there will be the background. So suppose here for an example, I just mentioned that the corridor. Corridor में क्या होता है? You feel a sense of depth. Because क्या कर सकते हो in corridor, there will be the more light, there will be less light, there will be more, there will be less. So kind of pattern is going on, right? So you can feel a sense of depth over there. Because corridor बड़ा लंबा दिखेगा और सीधी एक लाइट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो flat appear होने लगेगा. But if there will be contrast visually, you can travel light, dark, shadows, highlights, right? That can create a feel of depth, right? Moment. When subject move closer and further from a light, the illumination falling on them can change significantly. Sometimes a half a screen or other material can be used to even out the light. In general, using a brighter, harder light from a greater distance away from the action will result in more event illumination than a softer unit close to the subject. Sometimes a very bright light position outside a window or on the far side of the room is the best way to prep interior action in a film. अभी जो हम बात कर रहे थे कि fall off must will remain same, right? तो suppose करो ये character start moving from one place to another place. अगर वहां तुमने 2-3 लाइटें लगा दी क्या होगा? एनीवन कैन रिकॉग्नाइज लाइटिंग कहां से आ रही है. टू मेक इट continuous, what you have to use is, because you are using artificial light, so two things that we can use. One approach is use bigger intensity light and on the further distance, बहुत ज्यादा distance पे use करेंगे तो क्या होता है? जैसे इससे distance बढ़ते जाता है लाइट का फॉल ऑफ बढ़ते जाता है, राइट? कि जितने तुम नियर बाय, सपोज अभी तुम्हारे घर में लाइट लगी हुई है ना, जैसे raise your hand और देखो ऊपर वॉल की तरफ लेके जाओ, you can feel the same number of intensity, but at a certain point you can feel the intensity of light is increasing. The reason you are just getting closer to the light. So if it will be on distance, there will be the more fall off. Fall off will remain same for the bigger areas, right? So क्या होगा? Either you use the bigger source of light and give the distance to it, right? तो जब distance ज्यादा दोगे, fall off ज्यादा होगा. If you character start walking in that zone from point A to point B, the fall off will remain same, so no one can recognize from where light is falling. कि light आ कहां से रहा है, कोई ये recognize नहीं कर पाएगा. But अगर wider shot कर रहे हो, lighting कर रहे हो, पहला approach यही होगा. The fall off of the character must remain same. It won't recognize that the light is coming from where. वो जैसे ही पता चल जाएगा, वो चीजें break हो जाएंगी, right? You can't create a feel of that. Then natural source. If you are going for natural stick look, examine the location for appropriating motivating source for the lighting. Most daytime scene include light coming through a windows. Actual window light may be used, but often it must be
simulate because the sunlight would change during the course of filming. If the window itself is not visible, you can position the light source wherever it seems possible. Okay, क्या कह रहा है? Natural source, try to use the natural source, but as I mentioned earlier, the sunlight will not remain same. Maybe there will be the cloud, maybe the positioning of sunlight will be changed. So if you want to create those things, right? अगर replicate करना है तो चलो सोर्स लाइट तुमने यूज भी कर लिया, बट यू हैव टू नोटिस कि लाइट कहाँ से आ रही थी, और अगर आप सॉरी सन ने पोजीशन चेंज किया है, यू हैव टू यूज द लाइट टू रिक्रिएट इट, राइट? उस चीज को फिर से रिक्रिएट किया जाना चाहिए, करते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यू वांट यूज द सनलाइट, सनलाइट यूज ही नहीं करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द विंडोज, वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट एंड द ब्लॉक द होल सनलाइट, whatever light sunlight is coming through the windows, we just try to cut all those lights by the bigger flag, bigger satin, we just try to cut or diffuse those lights. So agar wo intensity change bhi hua to we won't affect our scene, won't affect at all. So what we are doing, we are using a natural we are using artificial light to create a natural source or looks like the natural. So क्या होगा जब आप natural सच में use करोगे, at that point of time it may be changed because लाइट क्लाउड आ सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, बिकॉज फॉर द वन टेक लेने में आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगे, सन जस्ट चेंज द एक्सिस और देयर विल बी द क्लाउड और समथिंग एल्स, राइट? ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट इफ यू आर यूजिंग द आर्टिफिशियल लाइट एट दैट टाइम ऑफ द, ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्या होगा, आपको लाइट आपकी फिक्स रहेगी। One second. Okay, जी, क्या था क्वेश्चन? When people move around the in the scene, lighting approach आपका क्या हो सकता है? The first thing is to control the fall off, right? Fall off must be remain same. The second point is yours. Your characters or whatever your center of interest must be brighter. Third one is to create a sense of depth, right? There is a many things that you can mention, but these 3 or 4 things that you can mention over there. Not this one. Okay, so what is I'm just one minute. Yes. Okay, guys, the one question that I'll discuss over here, एक क्वेश्चन ही कर सकते हैं अभी, तो मैं ये कर दूं या गोल्डन आवर वाला कर दूं? The another day we'll discuss the golden hour, whatever the rest question will be, right? ये क्या है, character watching TV, so how would you like the subject to look like the TV is lighting? Okay. Basically इस टाइप की लाइटिंग को क्या कहते हैं? मूड लाइट, राइट? और सोर्स लाइटिंग। सोर्स लाइटिंग कहते हैं कि somehow if in your scene
If the light is visible, the practical light, that's called the practical. The light is visible and you are creating a sense that the whatever the light is coming on your characters is coming through that source or that practicals. That is called the source lighting. Here's the question is कि टीवी की लाइट आ रही है तुम्हारे कैरेक्टर के फेस पे and how you light up of it, right? So you know that you have to do lighting for it because the TV won't able to produce that much of light, so your character will looks like कि तुम्हारा character expose हो जाएगा, ऐसी lighting नहीं होगी. It means you have to create those things. And one most important part about the TV is let's keep changing the colors, right? Which kind of images will be there, वो अपने हिसाब से तुम्हारे फेस पे लाइट आते रहेगा, right? अभी तो अपने टीवी मॉनिटर पे चाहिए चेंज करो, मैं पीपीटी चेंज कर दूं, पीपीटी का कलर चेंज कर दूं, देयर इज अ डार्क का इमेज, लाइट कम हो जाएगी, राइट? अपने आप ये सारी चीजें चेंज होती हैं. तो इट्स डिपेंड अपॉन व्हिच काइंड ऑफ विजुअल्स इज गोइंग अपॉन देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है when someone watching anything on a screen, whatever TV or computer, the character is lit by a rolling pattern of colors, light and shadows. TV screen directly means light. So if there is a scene where characters are watching TV, they need to be lit by a screen light. So they are the method through which we can create the effect of it. Okay. Dimmer, because the thing is that light will keep fluctuating. Not the fluctuating, it means have you ever recorded a screen? किसी ने screen record किया? टीवी स्क्रीन फोन से किसी चीज से रिकॉर्ड किया कभी? Yes, sir. क्या फील होता है? कुछ एक लाइन सा दिखाई देता है, ऐसे कुछ आ रहा हाँ होता है, सर. लाइन सा दिखता है ना, काइंड ऑफ रोलिंग काइंड ऑफ पैटर्न इज गोइंग ऑन, राइट? Yes. रोलिंग से चल रहा होता है ना एक लाइन कंटिन्यूअसली, राइट? सो समहाउ तो था कि वो इंटरलेस वीडियोस थे एट दैट पॉइंट इट्स हैपनिंग. नाउ द प्रोग्रेसिव एट वंस इट्स चार्ज एट वंस दे गॉट. बट द थिंग्स इज दैट in the past, it was rather a standard practical for TV screen to use dim, blue, soft lights shining directly into the subject face. Since TV project high Kelvin degree lights, the screen effect light could then be plugged into a dimmer and slowly and slightly dimmed up and down as if images are moving across the scene. If dimmer is not available, and electric sat next to the light and the waving a stick of something in front of the light to create a moving shadows. Okay, क्या हो रहा है बेसिकली इसमें कि कैरेक्टर्स मूव भी करते हैं, राइट? कैरेक्टर इन द सेंस अभी मैं टीवी के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर कोई टेलीविजन देख रहा है देयर मस्ट बी कैरेक्टर्स, तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ व्हाट द कलर्स, राइट? तो वो ब्राइटर भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है. इसका फील कैसे आएगा? हाउ वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ फील्स? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ लाइट, राइट? कलर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, कलर चेंज होगा ना, वार्म से थोड़ा कूल हो सकता है, राइट? कलर्स चेंज हो सकता है और इंटेंसिटी चेंज हो सकता है. तीनों चीजें होंगी ना, कलर भी चेंज होगा, कलर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और थर्ड वन इंटेंसिटी, कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज हो सकती है. सो दैट्स द वन रीजन यू कैन यूज डिमर. ऑन डिमर व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन डिम द लाइट्स. आप लाइट को बढ़ा भी सकते हो, लाइट को घटा सकते हो. सो यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ नॉट अ फ्लिकरिंग, बट वो जो एक चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, वो चेंज आप मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट द डिमर बाय यूजिंग द डिमर, राइट? और अगर डिमर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? डिमर नहीं है तो गरीबों वाला जुगाड़ होता है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्लेस सम स्टिक्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट, और उसको थोड़ा बहुत आप क्या कीजिए, अप एंड डाउन सी पोजीशंस कीजिए. एक को मत कीजिए, ब्रिंग टू, एक नीचे जाएगा फिर ऊपर से आएगा. अब इसी को ऊपर नीचे करोगे तो किप रिपीटेटिव लगेगा, राइट? ऐसे नहीं करना है, मतलब एक नीचे गया दूसरा फिर नीचे आएगा. तो ये रोलिंग का पैटर्न आना चाहिए, रोलिंग अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए. ये फ्लिकर जो हो रहा है कुछ ऐसे आया फिर ऐसे आया, नॉट द कंटिन्यूअसली. ऐसे कैरेक्टर बिल्कुल रिदमिक होके मूव कर रहा है, लाइट बहुत रिदमिक है, बहुत रिदमिक भी नहीं लगना चाहिए, पूरा अनइवन मूवमेंट्स होने चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आपके पास डिमर नहीं है तो द अनदर ऑप्शन इज वी कैन यूज सम स्टिक्स, हैंड्स. कई बार लाइट के आगे हैंड रख के भी हम कर सकते हैं, राइट? अगर कुछ नहीं है आपके पास तो नहीं, अगर है तो दैट यू कैन best way to use sticks in front of the light if you don't have the dimmer. There's a dimmer, you can say over here.
यहां से इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और एक चीज और है, मैं इंटेंसिटी से बता दूं आपको कि किसी भी लाइट का वो डिमर पे रखते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं तो क्या होता है? आई थिंक मैंने बताया था आप लोगों को। If we reducing the intensity, the another things that is affect, फर्स्ट से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दूसरा yeah, not the temperature, it's the color temperature. Color temperature will reduce. Suppose you are using a light that have the 3200 Kelvin और 100% उसको 90, 80, 70, 60 की तरफ लेके जा रहे हो तो 32 कम होते जाएगा, इट्स बिकम 28, 26, 25 लाइक दैट। सो जब डिम कर रहे हो तो कलर भी चेंज हो रहा है। तो डिमर not only reduces the intensity of light, it also reduces the color temperature. Color temperature भी उसका कम होगा अगर वो इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है तो। RGB. Now TVs have moving color image, so we can use three tiny lights such as gamma sticks up in a line, place red, blue, and green gels on them, dim them up and down. Shadows from a screen light don't move so erratically unless the subject changes the channels. In this case, light should make a fast change. Okay, so what we can do, we can use the RGB patterns, RGB tubes, जिसपे कि तुम अलग-अलग जेल्स लगा सकते हो, and you can put it on dimmer, right? जैसा मैंने अभी कहा कि इतनी abruptly बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, कैरेक्टर भागने नहीं लगता है, so it takes time, तो gradually you can change the, you can dim the light. हाँ, ये बहुत फास्टली होगा once they change the channels. तो जैसे ही चैनल चेंज होगा, for the fraction of second, it will be the blank, again there will be the light. So it's very easy to control it through the dimmer. There will be the RGB because of the different colors, but with the help of dimmer, you can use it. Right. Multicolor LED now 3. There are multicolor LED lights that can be programmed to create this effect. No need to wave the stick or something in front of light to create a moving shadows. But the thing is that we're not using dimmer or the RGB patterns or that the handheld techniques. There's a method, right? There's a things. ये programmed होते हैं पूरे के पूरे, जैसे देखते हो ना कि वो क्या कहते हैं सॉन्ग वाले लगा के रखते हैं, I just forget the name. DJs वगैरह जो लगा के रखते हैं यार, Laser lights. not the DJ lights. DJ जो use करते हैं for the music, what interface it calls? जब वो volume up and down and manage the things, वो क्या कहते हैं उसे? I just forget the name. Mix. Console kind of, right? So nowadays, light is also operated through the consoles, right? कि पूरा का पूरा set लगा रहता है. Which light you want to increase the intensity, which particular light you want to less the intensity. So everything is programmed, okay? So accordingly to music, accordingly to movement, light will flicker, light will is the dim, right? तो वो जैसे देखते हैं ना म्यूजिक पे लगा हुआ साउंड है, कुछ ऐसा है लगता है ना. So now you can program it, but the thing is that you have to pay more for it. There's the other options कि तुम्हें जो भी effect चाहिए. Now the lights comes like that. The step panel is the light in which you can create the flickering effect. तुम जाके अपने मोबाइल ऐप से उसमें सेट कर दो, टाइमर सेट कर दो कितने टाइम के लिए फ्लिकरिंग इफेक्ट होना है. कैंडल लाइट इफेक्ट है, जैसे कैंडल फ्लिकर करता है वैसे ही कैंडल फ्लिकर करता है. But now the things become easy, but once you have to explain it, try to use something that is different. Like ये तो सारी चीजें मिल रही, इससे तुम कर लोगे, but what your approach is, तुम क्या करोगे जब ये चीजें नहीं, what's your approach, right? तो ट्राई टू मेंशन दोज थिंग्स कि तुम कैसे इस चीज पे, ये तो बना बनाया हो गया, मल्टी कलर एलईडी आता है, प्रोग्राम फिक्स करो, यू विल गॉट दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, राइट? बट द बेसिकली इज कि हम कैसे यूज कर सकते है ना, कि जैसे कि तुम अपने जुगाड़ में बता सकते हो कि मैं अलग अलग कलर के बल्ब्स ले सकता हूँ, राइट? 3200 वाला एक वो डे लाइट वाला, जस्ट पुट सम जेलेटिन कलर्स ऑन इट, मेक इट ऑन द डिमर. एक डिमर पे तीनों को अलग अलग लगाऊंगा, अलग अलग डिमर को ऑपरेट करूंगा. तो बिकॉज हो सकता है कि सिर्फ येलो की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, ब्लू हैव द लेस इंटेंसिटी. तो यू कैन मैनेज दोस थिंग्स एंड ट्राई टू क्रिएट इट. ये कैसे हो सकता है, राइट? सो
Basically this question is meant for the what is your approach to creating this effect, not the what the industry is using. वहां तो सारे ऑप्शंस हैं, राइट, बट तुम्हें ऑप्शंस पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट 1 or 2 पॉइंट यू मेंशन दैट विल बी योर अप्रोच, दैट इज योर अप्रोच। जैसे मैंने 4 आपको बताया, उसमें 2 हमने लिखा कि हम स्टिक से भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमने ज्यादा आरजीबी ट्यूब्स बताया या हमने आपको मल्टी कलर एलईडी बताई। आप ये ऑप्शन दोगे कि हम यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू ऑल्सो मेंशन 1 or 2 दैट इज योर अप्रोच, कि हाउ यू विल अप्रोच फॉर इट, राइट, कि आपका अप्रोच कैसा हो। So the 2 questions that I have discussed, or we faced, but we don't have that much of time. So as if you wanted to ask anything, you can ask me. कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। सर इस क्वेश्चन में आपने डिमर से पहले एक और एलिमेंट की बात की थी, उसको दोबारा इलेबोरेट करोगे क्या? कौन सा क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन में जब आपने कि हम टीवी सीन को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं डिमर से Dimmer? पहले मतलब यही क्वेश्चन शायद। यही था ना? हाँ जी। क्वेश्चन यही था नहीं, मैंने जो आपको बताया था 2 प्रोसेस बताया। एक तो ये है कि यू कैन जस्ट पुट लाइट ऑन डिमर, राइट, कि लाइट बिना डिमर के तो यूज होगा नहीं। आप डिमर पे क्या करोगे, लाइट को इंटेंसिटी बढ़ाओगे और घटाओगे, राइट, जो कि बेसिकली होता है टीवी में, यही होता है ना कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, कोई कैरेक्टर आता है तो लाइट बढ़ती है, लाइट घटती है, दूसरा कैरेक्टर आता है, स्क्रीन ज्यादा ब्राइट होता है, राइट, और अदर इफ यू चेंज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्लैंक होगा, फिर लाइट बढ़ेगी, यही होता है ना। तो डिमर से तो आप ये काम कर सकते हैं, राइट, आप डिमर से ये काम करेंगे, उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, बट एक जो लाइट के अंदर जो पैटर्न है बेसिकली, अगर मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, डिमर नहीं है, राइट, तो इफ यू पुट समथिंग लाइक द स्टिक और समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट, क्या होगा? जैसे देखो ये लाइट आ रही है ना, ये देखो जी। मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस। ये कुछ हो रहा है ना फ्लिकर, यहाँ पर, लाइट फ्लिकर हो रही है। हो रहा है ना? क्या ये इफेक्ट आता है टीवी पे? जी। टीवी पे आता है ना ये इफेक्ट। अभी मैं क्या करूँ, अभी तो नॉर्मल में अपने लाइट सोर्स, क्योंकि मेरा सोर्स काफी हार्ड है, इसलिए आपको ये पैटर्न दिख भी रहा है। मेरा सॉफ्ट, ये जैसे देखो दूसरी वाली लाइट है, ये सॉफ्ट है। मेरी जो सेकंड लाइट है, जो मेरी फिल लाइट है, वो देखिए ये सॉफ्ट है। इसका कैसा लग रहा है आपको? फ्लिकर दे रहा है ना ये? जी। तो ये देसी जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ है। किसी भी लाइट के आगे मैं ये लगा दूंगा। अभी आप यही समझो, इसी एक लाइट पे मैं क्या करूंगा कि मैं 3 अलग अलग लाइट लगाऊंगा, ठीक है। अभी लाइट कुछ मिक्स हुआ मेरे फेस पे, जी। अभी थोड़ा सा आपको क्या लगा होगा, हल्का ब्लूइश, हल्का वार्म, राइट। 2 लाइट जो है हमने लगाई है। इसी तरह से अगर मैं 3 लाइट यूज कर लूं, रेड, ग्रीन, ब्लू और समथिंग एल्स, और अगर वो नहीं है तो यूज अ ट्यूब लाइट, और ट्यूब लाइट पे मैं क्या करूंगा, जेलेटिन लगा दूंगा, राइट। तो ट्यूब लाइट पे अगर राइट। मैं जेलेटिन लगाता हूँ तो यू गॉट अ 3 कलर्स, मल्टी कलर्स। और उस लाइट को आप डिमर पे रख दो तो इंटेंसिटी भी कम होगी और डिफरेंट कलर की लाइट भी फेस पे आ सकती है, क्योंकि टेलीविजन पे ऐसा तो नहीं राइट। एक ही कलर की लाइट आती है, राइट। जी। 3 डिफरेंट कलर की लाइट आती है, तो दैट विल हेल्प यू आउट। Okay, the next class, I think it will be on Friday or Saturday, so you guys will got the mail for that. So on that day, we'll discuss few questions. Or in second half, we'll discuss the taxi driver, right? राइट सर, चैट बॉक्स पे क्वेश्चन सेम चीज के लिए बोला है मैत्रिया ने कि हम एक्चुअल टीवी यूज कर सकते अच्छा, why हैं। not use in actual? नहीं कर सकते because your camera don't have that much of range. और दूसरी बात की कोई भी आदमी टेलीविजन देखता है तो कितने फीट के डिस्टेंस से देखता है? 10-12 फीट से ऊपर। क्या आपको लगता है 8 फीट 10 फीट तक वो लाइट आ जाएगी? आ जाएगी वो लाइट? नहीं ना। तो दैट्स द रीजन, बिकॉज मैं लैपटॉप पे हूं तो यू कैन क्रिएट दैट थिंग्स कि लैपटॉप की लाइट आ रही है, उतनी लाइट हायर आईएसओ पे जाके शूट करोगे तो आ सकता है। बट फॉर द टीवी, कोई 32 इंच से कम की टीवी तो कोई देखेगा नहीं, तो उसके लिए कम से कम 7 फीट तो चाहिए डिस्टेंस। 8 फीट, 8 फीट तो वो लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, नजदीक जाके शूट करोगे तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ फॉल ऑफ चेंज होता दिखेगा।
तो वो पॉसिबल नहीं है, दैट विल नॉट पॉसिबल। तो चलिए Sir, I have a question, sir. या Sir, if अगर एक ही फ्रेम में हमारे पास राइट ना, एक्चुअली मेरे sure. दिस राइट सर जो अभी हमने क्वेश्चन ये टीवी का सीन हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये एक तो सब्जेक्टिव आंसर है, इसका कोई स्टैटिक आंसर तो नहीं है। तो इसमें मतलब जज क्या होगा, लाइक हम क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं? एक सेकंड, the frame, and then we have to create lighting pattern. Where would we place the light then? Yeah, your question is good. Just what I have discussed earlier when we started lighting, right, Shivam? So you were in that class. The Yes. four things that the aspect of light quality of that we have discussed is क्या था वो? Direction, intensity, direction, intensity, quality, color, right? Yes, तो ये sir. जो आपका क्वेश्चन है किससे है? डायरेक्शन से है। तो यू हैव टू फाइंड द वे और पोजीशन दैट शुड नॉट लुक बहुत एबव देन द सोर्स और द बहुत बिलो देन द सोर्स। नियर बाय टीवी के ऊपर लगा देंगे, हो सकता है ना, बिकॉज कोई भी आदमी टीवी तो आई लेवल पे नहीं देखता है, टीवी थोड़ी ऊपर ही होती है, राइट? टीवी ऊपर ही होता है ना बाकी कैरेक्टर से, नीचे Yes, तो sir. नहीं होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज नीचे तो लाइट लग नहीं सकती है, नीचे लगा हो तो किसी को पता चल रहा है टीवी ऐसे कौन देखता है, इसका मतलब ऊपर से लाइट आएगी। आई कैन फिक्स द लाइट एबव द टेलीविजन, वहां से मैं लाइट कर दूंगा। आई गॉट द आंसर। Yes, sir. Thank you. चलो हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था कि ये कोई फिक्स तो पैटर्न नहीं है। देखो, कोई आंसर इज नॉट फिक्स्ड इन सब्जेक्टिव, इट्स टोटली इट्स योर ऑब्जर्वेशन जिसपे आप आंसर देते हो। मैं डे 1 से यही कर रहा हूँ, इट्स योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द लाइटिंग व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। सो ट्राई टू ऑब्जर्व एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, और वही आंसर होगा। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, सो व्हाटएवर आई फील, व्हाटएवर माय अप्रोच दैट आई एम डूइंग फॉर दैट थिंग्स, जो मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे ये फ्लिकरिंग करना हो तो मुझे पता है, जैसे एज इफ राइट नाउ ही आस्क्ड मी कि क्या करूंगा जब फ्रेम में टीवी भी होगा और वो भी होगा, मैं क्या करूँ। मुझे बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने लाइटिंग की हुई, आई हैव एन एक्सपीरियंस। मैंने टीवी के ऊपर एलईडी लगाई, वहां से लाइट कर दी, कुछ पता नहीं चला, किसी को नहीं पता चला लाइट कहाँ है, नहीं यही लग रहा था टीवी से लाइट आ रही है। तो वॉट एवर अप्रोच दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? कि ये अप्रोच किया जा सकता है। दिस आर द 4 और 5 चीजें हैं जो लगाई जा सकती है, जो कॉमन है। नो यू फील एनीथिंग दैट इज डिफरेंट कि नहीं ये भी तो हो सकता है, यू कैन राइट यू कैन राइट इट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जेन्युइन होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। बेसिकली कोई भी इलॉजिकल अप्रोच नहीं चलेगा, है ना? जो भी होगा वो लॉजिकल होगा, और लॉजिकल कोई चीजें कभी कब होंगी, या तो प्रूवन है या आपने एक्सपीरियंस किया है, तभी होगा ना। या तो किसी ने उसे प्रूव किया है या आपने एक्सपीरियंस किया, तभी हो सकता है। तो योर अप्रोच मस्ट बी लॉजिकल। जितने भी क्वेश्चंस आपने सब्जेक्ट की देखे हैं, everyone just go through the previous year's questions. Most of the questions is not related to technical aspect of this, related to the the whatever you experienced, either in terms of lighting. तो मैं visually जो भी experience किया है ना, they just wanted to explain those things. नहीं तो इस क्वेश्चन की क्या जरूरत थी? narrate the 10 visuals from your क्या कहते हैं, from your house to your examination center। क्वेश्चन था ना कुछ ऐसा ही कि 10 विजुअल्स को एक्सप्लेन करो, राइट? था ना कुछ 2017-18 में क्वेश्चन आए थे, राइट? सो ये इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट यू एक्सपीरियंस और उसके ऑब्जर्वेशन तुम्हारे क्या है, राइट? तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं यही बस लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 और 5 पॉइंट है दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग, तो ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे एटलीस्ट कि ऐसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है।
That's why मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही आंसर है, because there's no formula. ये मैथ्स नहीं है, a+b का होल स्क्वायर जो मैंने बताया वही होगा. It's totally subjective, but it must be the personal experience. It comes from the personal experience. कि मैंने जो किया है, जो मुझे लगा है, उस चीज को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. So whatever you feel, you can write it. Okay. Right, sir. Okay, guys. So see you on a Friday or Saturday, whatever it will be. So you guys will got mail for it. Till then, bye. Take care. Good night.